4. Commander Peggy Whitson, the first one. Historic visuals on your screens of the docking of the Axiom 4 mission, the crew at the International Space Station. Welcome aboard the International Space Station. Pilot Shubhanshu Shukla is the next one to come across, representing ISRO. It is his first space flight for Peggy Whitson, her return to the International Space Station on her crew has entered. As a member of an Indian Axiom is in space again. An Indian is at the International Space Center after first Indian at the International Space Center, an Indian in space after 41 years. It's a historic moment for India. Fourth private astronaut mission to arrive to the orbital outpost, and the first since January of. Now this team is set to conduct 7 experiments in 14 days. That's what we understand. But it will all begin with an inaugural briefing in about an hour's time from now. A briefing by all the astronauts who have reached the International Space Station. We're continuing to follow along as we'll wait for the formal welcoming remarks that are currently scheduled for roughly 8:35 a.m. Central Time, so a little bit more than an hour to go as the crew continues to settle in. After you heard the remarks from Peggy Whitson mentioning the long quarantine, the ride up, which took a little bit more than a day's time to do so. As the teams here in the International Space Station Flight Control Room. The Axiom 4 crew welcomed by the team stationed at the International Space Station. Even as they are set to begin their mission after that inaugural address that we've been telling you about in just over an hour's time from now. Which certainly was busy. That saw the multiple burns as the Dragon spacecraft named Grace would continue its transit to catch up to the International Space Station, and ultimately docking at 5:31 a.m. Central Time with that initial contact. The soft capture turned to hard capture and mating. Hatch opening procedures took about 2 hours or so to complete, with teams on both sides inside the Dragon pass hatch, receiving great big hugs from Nicole Ayers and the Expedition 73 crew. Axiom at Mission 4, welcome aboard the International Space Station. Pilot Shubhanshu Shukla is the next one to come across, representing ISRO. It is his first space flight for Peggy Whitson, her return to the International Space Station on her 5th flight, second as a member of Axiom Space. सफल लैंडिंग हो गई, ये तो बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए तो खैर अच्छा है ही है। हमको तो बहुत खुशी हो रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत कुछ होती तो थोड़ा खराब लगता, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, अच्छा है। इस दिन के लिए कई प्रार्थनाएं की होंगी आपने? प्रार्थना रोज करते हैं। कैसा लगा जब पहुंच गए? बहुत अच्छा लग रहा है, उसके पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अब यही है प्रार्थना भगवान से कि जो कुछ जिस लिए गए वो सब काम संपन्न करके आराम से वापस धरती पर आए। अब इसकी प्रार्थना करनी है। एक बड़ी सफलता है, सफलता के पीछे आप किसको देखते हैं? सफलता का श्रेय हम अपने बच्चे को ही देंगे, उसका खुद का श्रेय है इसमें किसी का हाथ नहीं है। उसकी कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और निष्ठा, उसकी काम के प्रति लगन जो है, उसने उसको इतना ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। बहुत खुशी है, बहुत अपने को जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बच्चे ने सफल उसके जो है डॉकिंग हुई है, इसके लिए हम जो है ईश्वर को बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं उसको। बहुत हम जो है उसको इसी के लिए प्रार्थना की थी कि ईश्वर ने हमारे बच्चे पर जो है पूरी छत्र छाया है उसकी, और उसके लिए हम ईश्वर को जो है पूरी तरह से अपने दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत हम प्रसन्न हैं। हमारे बच्चे की जो है भी लैंडिंग हुई है, कायदे से जो है डॉकिंग हो गई, ये बहुत खुशी की बात है। ये बहुत ही अहम पड़ाव था, उसके लिए उसने जो है अच्छी तरह उसने मेहनत करके जो भी सक्सेस प्राप्त की है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और बच्चे पर गर्व है, हमें पूरा अपने बच्चे पर गर्व है। और बच्चा बोल्ड है शुरू से ही, बताया तो कि स्कूल का जो है ये सब महिमा स्कूल की है। हम लोग भी हैं, मगर स्कूल ने बहुत कुछ दिया उसे।
इतनी बोल्डनेस जो है बहुत ज़्यादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करने अब उनका प्रोग्राम है, उसमें जाएंगे हम, मिलेंगे जाके, उनको बुलाया है तो हम जाएंगे, अभी यहीं निकलेंगे हम।